Hey everyone, welcome to a brand new review episode of this fantastic Triumph Speed 400 जो मेरे सामने खड़ी है. So, let's start the video and review this fantastic bike. तो हमारे सामने है आज ये कॉम्पैक्ट पावरहाउस, एक मॉडर्न क्लासिक, एक रोडस्टर जो रीडिफाइन करती है मिडिल वेट सेगमेंट को. जी हाँ, दिस इज द Triumph Speed 400 और आज we will dive into everything that makes this machine a total game changer for the Indian market. So start करते हैं review with the design of the bike. Now, at first glance, the Speed 400 looks muscular. तो ये compact profile bike है जो बढ़िया muscular और solid लगती है from all angles. The bike has a sculpted tank, tight lines and an upright stance जो इसे देता है एक क्लासिक ट्रायम्फ वाली फील. द बाइक लुक्स लाइक अ बाइक मेड फ्रॉम द ट्रायम्फ DNA with a modern twist in terms of design. In terms of design, we just adore some of the design elements given in the bike. सबसे पहले अगर आप देखोगे इसका the beautiful front LED light and DRL halo looks pure class. Now this guy wide exhaust है that gives it a mean growl and a purposeful look. बहुत ही यूनिक, बहुत ही चौड़ा, बहुत ही बढ़िया एग्जॉस्ट दिया है इसमें जो हर एंगल से बहुत अच्छा लगता है. ना इसमें एक फैट 17 इंच टायर दिया है जो ऐड करता है ग्रिप, प्रेजेंस एंड स्ट्रीट क्रेड ऑफ द बाइक. उसके अलावा इस बाइक में वी लव दीज बार एंड साइड व्यू मिरर्स. बहुत बढ़िया दिखते हैं. दे आर स्लिक, फंक्शनल एंड ऐड टू द प्रीमियम वाइब ऑफ द बाइक. नाउ ओवरऑल Triumph has kept this design simple, clean. The bike looks and feels premium from all angles. और ये बाइक हर तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइक लगती है, ready for Indian roads. Now in terms of design, we like it and we give it 4.2 out of 5. उसके बाद let's move on to the performance of the bike. Now as I sit on this machine, it feels incredibly light. Now the riding position on the bike is upright and you feel very tall when you sit on the bike. Now when I start to ride the bike, the throttle response of the Triumph feels sharp and intuitive thanks to the Bosch electronic fuel injection system and ride-by-wire throttle. This motorbike feels smooth and controllable, which is ideal for both city rides and spirited highway runs. Now the bike tags along in the smooth manner. अगर आप इस बाइक को ज़्यादा पुश करोगे तो ये बाइक स्मूथली आगे बढ़ती रहेगी और रोड पे काफ़ी अच्छी पंची पावर आपको देती रहेगी. नाउ इन टर्म्स ऑफ पावर, अंडर द हुड इस बाइक में है 398cc liquid cooled single cylinder DOHC engine. Now it turns out a solid 40 PS of power at 8000 RPM and 37.5 Nm of torque at 6500 RPM. तो अगर इस बाइक को आप अच्छे से रोड पे चला रहे हो, the bike rolls in a very confident manner. As a rider, I could feel the power of the engine as it keeps powering along with ease. And the bike is full of power without any sort of rough edges. In general, बाइक को एक बहुत ही अच्छी mean, compact, powerful बाइक रखा गया है जो हर रोड कंडीशन में बहुत अच्छी चलती है. And this proves to be one of the best bikes in terms of power in this segment. Now in terms of handling, what keeps the bike confident and planted is a hybrid spine perimeter frame. ठीक है, एक 43 mm upside down big piston fork in front and a gas charge monoshock with preload adjustability at the rear. The bike feels nice and stable on the road. As a rider, you can maneuver the bike through traffic with ease. Now the bike is able to gobble up bad roads thanks to its incredible frame and spine. Now when it comes to stopping power, Triumph has nailed it with the 300 mm front disc brake with radial calipers and a 230 mm rear disc brake with dual channel ABS. In terms of fuel efficiency, you can expect a mileage of 30 km per liter, which is good for a bike of this size. Now overall, the bike has smooth power delivery, road stability and good rider ergonomics, which makes this bike perfect for Indian road conditions. We just love the bike. We just love the simplicity, the power and dynamics. We give it 4.3 out of 5
in terms of performance. Now, with the performance done, let's talk about the features and tech given in the bike. Now, सबसे पहले इसका जो feature है, this bike has a fantastic switchable traction control system. Now, the traction control system, this allows for a smooth ride as you're able to play with the traction control of the bike. Now, उसके अलावा जो इसमें दिया है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, as this bike has an analog speedometer paired with an LCD multifunctional display. Now यहाँ पे क्या है कि analog display दिया है, but it's a functional display क्योंकि Triumph wants to keep this bike simple. They don't want you to get distracted by a full LED system. तो इसीलिए उन्होंने एक यहाँ पे एक analog speedometer दिया है, but it is functional, it is good and it carries a lot of info for the rider. तो एक और फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें है एक, पहले भी जो मैंने डिस्कस किया था, एंड ऑल LED लाइटिंग सेटअप. इसका जो LED लाइटिंग सेटअप है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइट थ्रो, और रात को नाइट राइडिंग में स्पेशली आपको इसकी जो पावर है वो फील होती है. उसके अलावा इसमें एक और बढ़िया फीचर दिया है जो कि आपको Triumph प्रोवाइड करता है, विच इज द क्लास लीडिंग 16,000 किलोमीटर सर्विस इंटरवल, जिसकी वजह से आप इस बाइक को लंबी राइड्स पे चला सकते हो विदाउट एनी टेंशन. ओवरऑल दिस इज अ डिसेंट बाइक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. वी रेटेड 4.1 out of 5. Now in general, if you are a seasoned rider looking for your first big bike, the Triumph Speed 400 would be a perfect blend of performance, style and everyday practicality for you. The bike comes in the colorways and the price mentioned in the screen. उसके अलावा अगर आपको बाइक को चेकआउट करना है, you can check out in the Triumph showroom near to you. If you want to know more about the bike, you can ask us in the comments below. इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ. I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.